You got what I said, right? Yes, sir, I got. Does yeah. Go ahead. Yeah, so the thing is that like I am right now doing my film studies from Pondicherry Central University. So I am into direction, I am into screenplay writing also, but Which I'm which not a good which central Pondicherry Central which central university? Pondicherry Central University. Oh, okay, okay. All right. So I'm not like very good, or I'm not like mediocre in painting. So when I'm doing storyboards, I'm not a storyboard artist. So I know how to portray my shots in a like a clear manner in storyboards. I can do that, but I don't know how to like draw properly. So is that going to be something like problematic for my evaluation? Uh, Go online and check for storyboards of Taxi. Okay, Martin Scorsese, the director himself, drew that. He can't draw. You can see that if you see the see his storyboards, you will realize it doesn't matter how well you draw. It's about composition. Like एक frame है तो कहाँ कहाँ आदमी लगाया है ये. Those kind of things are important. So as a director, you will know what is important to show, what is not important to show. So your realism of your drawing or how good you draw is not important. The important thing is how do you build a scene using compositions. Yeah. And storyboard is just Okay. even if you put the single straight line figures and just you have to place your objects and your characters, how the light will be blocking between the two characters and the lighting will be placed. That's the main thing about the storyboard thing. So you can draw your stick figures and just point everything, and that's okay. And also there are a few things which there are a few tricks inside storyboarding, like you draw arrows to show which way the frame is going. So you can draw a big frame and small frames within that to show okay, the shot will start on this frame and end in this frame, and draw arrows between to show which direction is movement and all that. So these things are quite how to say improvisational things. There is no standard for that. The proper storyboards are done by people from art schools and stuff, who are sometimes not even into films. वो तो सिर्फ drawing करने के लिए बैठते हैं. Even then, the director will have to sit and tell them कि क्या है, कहाँ है, कैसे है. So the director's storyboard is something that the artist can work off. So if it is good enough in that sense, then it is good enough. You don't have to really be very good at drawing. Yeah. Or you can just, Okay, sir. as sir said, just go through some storyboard stuffs which are present online that will give you an idea about it. Yeah, so Okay, definitely sure. check out the Taxi Driver storyboard. It will make you feel better. Martin Scorsese's Taxi Driver. Yeah. It's easily available. I Yeah, mean, you okay, just Google it, it will just come up. Can anyone put that on the chat, please, as the name of the director and his work? Yeah. And also for Anand, as Anand asked, कि कैसे screenplay writing को improve करे. It's also a good idea to read the screenplays of the different feature films which are available online. आप लोग online जाओगे और screenplay निकालोगे ना और उसका पढ़ोगे तो that will also give an idea कि screenplay कैसे लिखे जाते हैं. और आपका ये जो बेसिकली जो आपका ये पेपर है ना, तो आपको पूरा पूरा 2 घंटे का स्क्रीन प्ले तो लिखने देगा नहीं. तो आप पर्टिकुलर सीन्स के ऊपर ध्यान दो, सीक्वेंस के इसके ऊपर ध्यान दो कि जो फिल्म में पर्टिकुलर सीन और सीक्वेंस को कैसे दिखाया गया, कैसे शो किया गया है. तो उसका आप स्क्रीन प्ले पढ़ोगे तो आपको उससे समझ में आएगा कैसे क्या करना है. आनंद, आर यू हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बेसिकली देखो, कोई भी आप राइटिंग करते हो ना, तो राइटिंग के पहले क्या आता है? आइडिया आता है. ठीक है, एक आइडिया है कि अपने को आइडिया इज बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज हो रही है तो उसकी अपने पास आइडिया है. फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टोरी डेवलप करते हैं. फिर हम लोग कैरेक्टर्स डालते हैं उसमें. कैरेक्टर्स के बीच में क्या होता है? डायलॉग्स होता है, राइट? अब डायलॉग्स कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कैरेक्टर्स कहाँ दिखा रहे हैं, कौन सी वो प्लेस है, कौन सी वो सिचुएशन है, उन दोनों की क्या साइकोलॉजी है दोनों कैरेक्टर्स की, जो तो वो सारी चीज क्या होती है, क्या वो लोग कपड़े पहने हैं. तो दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले राइटिंग. तो आपको जब भी आप लिखो, आई थिंक जो भी यहाँ पे सबकी लिखने की प्रैक्टिस होगी तो सब लोग ये चीज समझते होंगे. तो इसी के बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करो अपनी. ओके.
guys, we are Hello, waiting. ma'am. One more question. Yeah. लाइक मैंने पास के पेपर्स में देखा था, लाइक मतलब एक पेंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, जी लाइक गिवन पेंटिंग या कुछ रहेगा और उसको लाइक कुछ एक्सप्लेन या कुछ करना रहता है, तो लाइक उसको कैसे वो कैसे करना चाहिए? So लास्ट basically, टाइम तो नहीं आया था, लास्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं आया था, और पता नहीं। but it may can nahin, come. but Srijit may answer it. Yeah. so the thing about such things is that the image is basically a trigger for you. So they are trying to trigger you to write something. मतलब ऐसे randomly किसी को बोलोगे कि कुछ लिख लो, उससे बेहतर ये है कि then you have some reference for the testing. ना, if I'm later looking at the image and reading what you have written, then the correlations that you made, that's what they're looking for. So again, it's really just a matter of being able to articulate things, able to where the the ease at with which you say things, you know. So trigger होता है वो, कई बार फिल्म के क्लिप्स भी यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, like some random film. So sometimes famous films like say Antonioni's Red Desert, when one of the entrances they had a picture from Red Desert, and when I'd written about it, I hadn't mentioned the film, you know, even though I knew it, you know. So those images are used more as trigger, matlab, take it out of context from what you actually know about it. If they show a Van Gogh image and you realize, oh, I know this image, this is a famous Van Gogh picture, you don't have to write about that picture itself. There what they're looking for is how does it trigger you, what do you see in it which others haven't seen. Make sense? ओके सर। Yeah. Any further question, guys? Sorry, ma'am, one more question to sir. Sure. Lighting, should we mention the lighting in the screenplay, like the scene description and all that, what you said, that we will include. But the lighting, is that important? See, by lighting, it doesn't mean you need to know how to light. You should just be explaining because lighting is part of the ambience description of the image, right? So to that extent, you need to understand lighting, but not to the extent where you need to know कि यहाँ पे 2K लगाए कि 6K लगाए कि gel लगा के light लगाए. ऐसी बातें नहीं करनी होती. You don't have to talk like that. All you need to know is what is the overall atmosphere that you create with it. Okay, like warm light or cool light, what kind of lighting? That thing only. No, like for example, it was dusk time. The red light reflected off his eyes, something like that. More literary effects than typical technical cinematic stuff. But Okay, but sir. again, the thing is, it shows your knowledge in film. So if you understand these things, you know what it is, then you can mention such things. You know, you don't have to stop yourself. But at the same time, you really don't have to study lighting or anything for this. Okay, sir. Any further question, anyone? बेसिकली देखो डिस्क्रिप्टिव में जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि पेंटिंग और फोटोग्राफी देके ऐसा टोल्ड दे जस्ट ट्राई टू पुट यू इन दैट जोन सो दैट यू कैन राइट एंड ऑल. तो और क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? बेसिकली वो लोग आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं, आप क्या सोचते हो, तो आपका सोसाइटी जो कुछ भी अभी सोसाइटी में चल रहा है जेंडर का या पर्टिकुलर जो भी फिल्म जिस तरीके की आ रही है, तो उसके ऊपर आपका कमेंट मांग सकते हैं कि ऐसी चीज हो रही है तो आप उस पर कमेंट करो, राइट? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाता है. व्हाट इज द जॉब ऑफ द डायरेक्टर, कोई भी आपका फेवरेट डायरेक्टर है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. बेसिकली एफटीआई के जितने भी एलएम्स हैं उनके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनके रिसेंटली वर्क को एनालाइज करो और व्हाई यू लाइक दैट पर्टिकुलर सीन और पर्टिकुलर वर्क. ये सारी चीजें डायरेक्टर का क्या जॉब होता है ओवरऑल फिल्म प्रोजेक्ट पे, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं. फिर रिलेशन ऑफ अ डायरेक्टर टू डिफरेंट मतलब टू एक्टर्स और सिनेमेटोग्राफर्स और ये सारी चीज पे
क्वेश्चंस आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, ये चीज है। एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? Also, या श्रीजी। also I just wanted to tell you all one more thing is that you know the 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 objective type question answers thing is it's a long, it covers everything. मतलब कि कोई क्वांटम फिजिक्स से भी बात करते हैं कुछ चीज, कभी पद्मश्री के बारे में बात करते हैं, कभी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कभी आर्ट हिस्ट्री के बारे में बात, मतलब it is basically you need to study basics of anthropology. Anthropology, if any of you don't know, is the science of all human knowledge, you know. So in a way, if you want to address that aspect of the question paper, you just have to study about the human life, you know, कि क्या क्या हुआ है शुरुआत से आज तक. So उसमें से कोई भी चीज पे आप पे क्वेश्चन आ सकता है, because it is basically anthropology, जिसके ऊपर आपको वो पूरा पैराग्राफ जी. जनरल नॉलेज पहले बोलते थे, जैसे हम कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में पढ़ते थे या मनोरमा ईयर बुक में पढ़ते थे, उस तरीके की पढ़ाई इधर फुलफिलिंग नहीं. श्रीजी there? Maybe network issue with him. I have shared the link for the book which I was talking, that is History of Indian Cinema. It's available on Amazon and it's not very costly. It's around like 250 or something. If anybody want to like go through the book, they can go. It's really helpful to get an idea about the history of Indian cinema. And secondly, there is also a film I would like, a web series, that is Jubilee. So it's also gives a it's also gives a gist about the Indian cinema history. But the character's name has been changed, so it might be difficult, but it will give you a good idea about the history of Indian cinema. And Yeah, the Jubilee will give you a feel of that time. yeah, But they won't, you know, ना like basic information चीजें फिर आपको उसके basis पे ढूंढनी पड़ेगी. whose mic is on? Can anybody please just share them? Rishabh, I think it's Yeah. And if fine. anybody would like to take the course with us, so we will provide you proper current affair ka booklet, and we will have like regular this mock test paper session, so that will help you in writing part also, and help you to assess yourself. And we are also having the art and culture notes and cinema notes, which we will share with you all. Yeah, so after every class, the lesson plan and the assignments attached to it will be one document which we will send to you. So even if after the course also, you can refresh yourself going through that. Yeah, and this course, if I talk about, it's of 2 months with 30 classes spread over 2 months, and the classes are like alternative weekdays. And the fees for the direction and screenplay writing course is like 10,000. One can pay in installment of two, that is 5,000 monthly. And the batch for the direction and screenplay writing, we are starting from Tuesday. And for the timing, we are mostly keeping it at night, because the students have their college, or if somebody of you is working, that they have their work. So we are keeping night classes for this. It's an online class. Recordings will be provided to you. And if through this course, if anybody is just qualified, and get qualified for the orientation and for their interview rounds, so we will also help you all to prepare for the same. And we'll provide the booklet for the MCQ that will include your current affairs, journal knowledge, notes on history of Indian cinema, art and culture, everything. And we'll also provide a MSQ for the particular subject.
and the description part, so is like handling. So with the proper review and writing exercises and everything is there. Would anybody like to ask any question? किसी को कुछ पूछना है? Nobody? Joyanta, Nitish, Aditya Raj, Kiran, Anand, Rakshal, Kirtiman Ashish, Sudhanshu, Subrat, Rishabh, Sujoy. Anyone? Okay. And apart from this jet preparation, one one more thing I just wanted to tell you all. The answers can be, I mean, the paper can be approached in two languages. You can also write in Hindi if anybody is more comfortable in Hindi. Okay. So I've seen that generally people all get panicked and they don't write in their natural language. Hindi mein likhna is as good as in writing in English. Again, just telling you. हाँ, that's a good point, श्रीजीत. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग अपना जो भी इस पर्टिकुलर चीज है, मतलब राइटिंग पार्ट का जो क्वेश्चन आता है, दैट इज डेफिनेटली ना कोई राइटिंग पार्ट आता है, ये तो बहुत लोग सोचते हैं इसको इंग्लिश में लिखे कि किसी में लिखे, तो लेकिन आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बेसिकली आप हिंदी लिखो एक बार स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते. मे बी जो टीचर है, जो मतलब जो पर्सन हु इज लाइक विल बी चेकिंग योर पेपर्स, ही माइट नॉट नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो बेटर टू राइट इन हिंदी. सिर्फ इंग्लिश में लिखना इज नॉट जरूरी. And ma'am, in SRFTI, is there any option to write in Bengali? Basically, I'm from Kolkata, so I'm just asking. I don't know actually. Uh, No, I don't think so because we have so many languages, and film schools have limited resources. So वो एक हिंदी और इंग्लिश के लोग रख लेते हैं, पर if you start like that, then people will start writing in Malayalam, Telugu, Tamil, Bengali, Gujarati. क्या करेंगे? फिर कितने लोग लाएंगे ना? So I think, I mean, it's restricted to English and Hindi right now, but hopefully in the future when things will be easier, they might get to other languages. Yeah. Because in the film school, a lot of people have made all kinds of languages of films, So the lingua franca of the filmmakers is allowed once you're inside, but for the entrance, it's just English and Hindi right now. Okay, sir. Okay. सर हाँ, please go ahead. क्या गलतियां नहीं करनी है सर रिसर्च या फिर पढ़ाई के वक्त, ऐसा कुछ जो आगे चल के पछतावा हो? basically, honestly speaking, like I said, कोई correct तरीका है नहीं इस चीज का. Like there is no exactly ऐसे करोगे तो आप पक्का ही पास हो जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है. और रही बात रिग्रेट की, तो पढ़ाई करने से आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा. मतलब whatever you study, you'll find some good use of it somewhere. तो I cannot imagine a bad way of studying. आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा कि ये तरीका खराब है पढ़ने का, ऐसा पढ़ा और ये खराब हो गया, वेस्ट हो गया? आप कभी रिग्रेट किए हो ऐसा? नहीं सर. तो वही बात. बेसिकली देखो, ये जेट का जो प्रिपेयर है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है. इसमें सीट्स कम होती है, प्लस अभी बहुत ज्यादा बैकलॉग भी चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. बहुत सारे बैचेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो अभी कंपटीशन लेवल ना बहुत ज्यादा है क्योंकि सीट भी कम है. तो आप आलस करके प्रिपरेशन मत करना, लेजी होके कि बस बेड से उठे और एग्जाम दे आए, अपने तो क्रिएटिव है ही, अच्छा लिखते ही और देकर आ गए. तो उस सिचुएशन में आपका क्लियर ना हो, ये हो सकता है. तो आई सजेस्ट एवरीबडी कि सब लोग थॉरो प्रिपरेशन करो, बेड से उठ के जाके एग्जाम मत देना, प्रिपरेशन करो ताकि आप कॉन्फिडेंटली लिख सको. टेक इट एज अ सीरियस अटेम्प्ट. ये नहीं कि अगले साल हो गया, तीसरे बाद में कर लेंगे. अगर वो माइंडसेट है तो बेटर आप फिर उस माइंडसेट को एक्सेप्ट करो. लेकिन आपको लगता है कि आपको इसी टाइम पे अटेम्प्ट करके क्लियर करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करना. आप अपने करंट अफेयर्स, जीक्यू, सब कुछ अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप तुक्का वुक्का ना बिड़ाओ एग्जाम में कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है. और चीटिंग करने की तो सोचना भी मत. क्या पता जो सामने वाला हो उसको भी नहीं आता हो, क्योंकि मोस्टली आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको भी नहीं आते, वो लोग बस प्रेडिक्ट करते रहते हैं, और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो आपका स्कोर लो हो जाता है. तो उस चीज के लिए आप बहुत केयरफुल होकर प्रिपेयर करें.
चीटिंग का तो सीन ही नहीं है ये, मतलब ऐसा एग्जाम है कि मतलब शर्म आनी चाहिए चीटिंग करने में, इसमें क्या चीटिंग कर लोगे आप? वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आप थोड़ा इधर उधर किसी का देख के कर सकते हैं, बट दैट डजंट, मतलब इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू विल चीट, विल यू? ओके ओके, No, किसका ये लाइक sir. सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है? एनीबॉडी हियर? सेकंड सेकंड होगा सेकंड भी। अटेम्प्ट है तो जस्ट सजेस्ट कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए आनंद। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो मैम ने बोला, बिल्कुल वो मत करो कि भाई वो मुंह उठा के चल दिया एग्जाम देने, वो तो बिल्कुल नहीं करो। राइट, एंड व्हाट जैसे मोर? जैसे लास्ट टाइम मैं, मेरा भी कॉलेज हुआ था, साथ में वर्क भी कर रहा था, नहीं मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था, बहुत हार्डली मैंने लाइक, बस उससे पहले थोड़ा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ये सब कर रहा था, थोड़ा बहुत मुझे जीके था समवेयर लाइक, तो तुक्के से या नॉलेज से जैसे भी लाइक, ठीक है एमसीक्यू निकल गया मेरा। आई डोंट नो जिन्होंने मेरा देख के लिखा, मुझे पता आइडिया नहीं कि उन्होंने कि वो उन लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिन्होंने मेरा आंसर देख के लिखा, बाकी ठीक है, वही सब्जेक्टिव का बस ये बोलूंगा प्रिपेयर करो। तो सबसे बड़ा मिस्टेक बहुत लोग का, मैंने पूछता हूँ कैसे क्या, नहीं यार मैं तो मुंह उठ के आ गया, ये करना है, लिख लेता हूँ मैं, जो हैबिट करता हूँ, जॉब करता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग है तो मैं कर लूंगा। आई डोंट नो ये ऐसे वैसे वर्क करता है कि नहीं। जिसने भी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दिया है उसके भी सेम एक्सपीरियंस रहे होंगे एज आनंद इज सेइंग विद अस। Yes, ma'am. और लाइक और एक चीज मैं पॉइंट ऐड करूंगा, अगर कोई ऑलरेडी लाइक फिल्म लाइन में सब में काम कर रहा है तो लाइक वहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि जो लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद है एमसीक्यू और एमएसक्यू में क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आधे क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं उसके आंसर कर पाया था, क्योंकि बहुत सारे लाइक ऑन सेट और ये सेट के एक्सपीरियंस के टाइप के क्वेश्चन थे, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो मुझे लाइक मैं ऑलरेडी मैं लाइक एडी काम करता हूँ, तो मुझे वो एक वो हेल्प हो गया था। अगर कोई करता है या किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करो, एज एन एडी करो, असिस्टेंट में करो, असिस्टेंट जो भी करो, एक हेल्प, ये मेरे अकॉर्डिंग हेल्प हो सकता है ये। हाँ, पर आप बम्बई में रहते हो, दैट इज वेरी इजी फॉर यू, ना स्मॉल टाउन पीपल इज वेरी डिफिकल्ट, कहाँ शूटिंग होता है ना आसपास में. लाइक व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई केम टू द फिल्म स्कूल, आई ओनली न्यू इट फ्रॉम द बुक, पढ़ के ही पता था मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ तो, आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन केरला, तो हमारे यहाँ तो कोई शूटिंग वूटिंग कभी मैंने दूर दूर तक नहीं देखा था. तो सो ज्यादातर लोगों का वही ये रहता है, यू आर अ लकी गाय बिकॉज यू लिव इन बम्बे ना. राइट, Yes, yes, somewhere can I say? या okay. And apart from this jet preparation, we also provide one-to-one mentorship on the particular field. Like जैसे किसी को डायरेक्शन के लिए mentorship चाहिए तो we'll give you like 3 months mentorship. एंड राइटिंग के लिए चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अलग है, स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए अलग है, एक्टिंग स्क्रीन एक्टिंग के लिए अलग है। तो सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्रॉपर 3 months की मेंटोरशिप देते हैं। एंड द फीस इज लाइक नॉट वेरी टू मच, इट्स टोटली पॉकेट फ्रेंडली। तो जिसको भी इसके ऊपर कोई भी क्वेरीज या कुछ भी जानना हो, दे कैन जस्ट डीएम मी सेपरेटली ऑन माय व्हाट्सएप। आई थिंक नंबर सबके पास होगा और आई पुट इट इन द चैट। तो वी आर ऑल्सो मैम इसके क्लासेस डेली होंगे? जेट की प्रिपरेशन के ये आपके ऑल्टरनेटिव वीकडेज के हैं। और जो हम लोग का मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम है जिसमें हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं, दैट इज टोटली कस्टमाइज्ड कोर्स आप कह सकते हो। एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की, मतलब यू आर अप्लाइंग तो यू वांट मेंटोरशिप मींस ऑलरेडी यू आर एन आर्टिस्ट, आपके तो उसकी आपके आर्टिस्टिक की क्रिएटिविटी को अंडरस्टैंड करके हम लोग वो कोर्स कस्टमाइज कराते हैं। फिर जिसकी जैसी नीड होती है हम लोग उस तरीके से उसको असिस्ट करते हैं उनके काम में। Basically, on a one-on-one basis, it becomes much easier to work with. If I'm working with 5 guys and I'm trying to teach them or like get them along, some people will fall back on certain things and some people will catch up on certain things quicker. So those kind of are not there. So it's like focused onto one person's what to call it, vision. या So कि आपके मतलब direction and
especially is about vision, you know. So we will work on that vision exclusively with a person if it is a one-on-one thing. So that's why we call it mentorship, where the thing is that कि आप कुछ करना चाहते हो और हम आपको उस direction में help करेंगे. Unlike this, where it is like we have a syllabus and a setup and we follow it like that. So in a personal one-to-one basis, then those exercises will be targeted. Each time we'll develop exercises as we go along, where you're weak, where you're bad, or what kind of things you need to gain, what kind of things you already have. Because कई बार classes लेते time somebody knows some stuff, but I'll still have to teach everybody that, right? So that is the idea of the mentorship. गाइज आई हैव शेयर्ड माय कांटेक्ट नंबर, तो जिसको कोई भी क्वेरीज हो ना, कभी भी, अभी, बाद में, कभी भी रिलेटेड टू द फिल्म मेकिंग, दे कैन जस्ट अप्रोच मी थ्रू दैट व्हाट्सएप नंबर, और इवन रिलेटेड टू योर जेट कोर्स विच वी आर ऑफरिंग 2 months जेट कोर्स, या फिर फॉर द मेंटोरशिप प्रोग्राम and you can just regular check our Instagram account, that is फिल्मी बैठक. तो उस पे हम लोग जितने भी हम लोग वर्कशॉप्स करा रहे होते, कोर्सेज करा रहे होते, उसकी अपडेट रहती है. मे बी यू कैन चेक इन द हाईलाइट सेक्शन और इन द पोस्ट. And I will request everybody to just turn on their cameras once so that class थोड़ी We can all interactive see each लगे. other. Yeah, class थोड़ी लगे कि we are not talking to screens. Ghosts. Yeah, It could be AI bots, all of you guys, huh? Who knows? yeah. So it's good जब हम लोग, और वैसे भी जब हम लोग किसी का फेस देखते हैं तो हम लोग ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं. Hi Anand. Hello. Good to see you, man. Don't be shy. हम सब लोग एक ही जैसे हैं. Come on, we all are filmmakers. See, I'm sitting in my bedroom. That's my bed. Yeah. Okay. I guess you're the only handsome guy. Anand. Confident enough to show your face. All right, it's okay. Okay. If there is no further questions, I will like to end the session for today, and I'll just Hello. give you all. Hi Rishabh, and we will give you all a little gist about the today's session. हम लोग ने क्या डिस्कस किया, क्या नहीं किया. सबसे पहले हम लोग ने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया, एमसीक्यू, एमएसक्यू और डिस्क्रिप्टिव में. एमसीक्यू में आपका क्या क्या आता है, आपका करंट अफेयर्स आता है, जीके आता है. करंट अफेयर्स और जीके अलग होता है भाई, लोग उसमें भी कंफ्यूजन कर लेते हैं. करंट अफेयर्स यानी अभी जो भी न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन. जीके मतलब जनरल नॉलेज, कि साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, दैट इज जीके. ठीक है. तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, सिनेमा, अवार्ड्स, एफटीआई, एल्यूमिनाइज, ये सारे 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए. अब आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या आता है, डांस, फोक, फोक डांस, म्यूजिक, थिएटर. आपका फिर आता है आर्किटेक्ट, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी. ओके. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. फिर आपका जितने भी जीआई टैग्स हैं वो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द दिस एमसीक्यू पार्ट. फिर आता है एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस. वो आपके, हाय, वी डोंट नो योर नेम, इट्स रिटन हियर वीवो. फिर आप I'm Riddhi, ma'am. हाय रिद्धि. Riddhima. Hello. Yeah. Nice. फिर Thank आप, you for showing your face, yeah. या Sorry, sir. I said thank you for showing your face. Yeah, yes, sir. देन फिर आपका था एमएसक्यू पर, दैट इज मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस. वो आपके टोटली पेपर बेस्ड होते हैं. तो उसमें आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं. चारों सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 1 सही होते हैं. कुछ भी अगर सपोज चारों में से 3 ही लगाया, 4 सही और 3 लगाया, तो भी नेगेटिव मार्किंग होती है. ओके.
और फिर आता है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें वो लोग आपको एनालाइज करते हैं योर पर्सनालिटी, आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, आपकी अवेयरनेस टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री, क्या ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड, किसी भी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस या एफटीआई की एलएम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, पर्टिकुलर कोट्स पे कमेंट करना, ये चीज है। ये चीज आपका एनालाइज, और कोई भी आपको डायलॉग लिखने बोल देगा या फिर कोई स्टोरी लिखने बोल देगा या फिर आपको स्टोरी बोर्ड दे देगा एज शी हैज मेंशन्ड, या फिर पर्टिकुलर पेंटिंग या फोटो फोटो दे के आपको मैम ऊपर मैम एनालाइज करने बोलेगा। राइट आनंद बोलो। आप लोग तभी लाइक स्टोरी बोर्ड के लिए कोई डायरेक्टर या उनका काम के लिए जब बता रहे थे, मतलब लाइक थोड़ा सा साउंड का इश्यू हो गया था, सुन नहीं पाया था। आई तो थिंक क्या था, लाइक श्रजीत। कौन सा There's a हाँ link on the in the comment in that what is chat section. There is a link. Basically, I was talking about Scorsese's film Taxi Driver. So there is a very famous scene in that where one guy walks through a building and goes and shoots some people. So that thing has been storyboarded very interestingly, and it has been by Scorsese, and it's drawn atrociously. But he doesn't know how to draw well. So, but the storyboard really works. So that's why that's one of the best examples for storyboard. कैन रीशेयर द लिंक, आई कैन फाइंड All right, I can do that. बाय मिस्टेकनली, लेकिन बीच में मेरा लीव हो गया था, तो लाइक रीजॉइन में लाइक प्रीवियस चैट्स उड़ गए। नहीं, वैसे वो बहुत इजीली मिल जाता है। उसका सीन ये है कि वो यू जस्ट हैव टू टाइप टैक्सी ड्राइवर। एनीवे, ये रहा, मैं लिंक तो भेज ही देता हूँ। इट्स नॉट सो बिग एंड डील। ऑल्सो मैंने अगर भी आप खोली थी। लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, आई पुट एवरी लिंक देयर एंड एवरी इंफॉर्मेशन, तो वो इजी हो जाएगा सबको कम्युनिकेट करने के लिए। एंड चलो, आ गया। Uh, पुट इट अगेन। या एंड स्क्रीन राइटिंग सेक्शन के लिए डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्क्रीन प्लेज ऑनलाइन अवेलेबल, उसे पढ़ो, स्टोरी बोर्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस देखो, और ये सारी चीजें। बेसिकली एफटीआई को, जेट को क्रैक करना, आपका थॉरो प्रिपरेशन, आपका लक, यही आपका क्लियर करवा सकता है। या तो सी, आपको थॉरली, because when anything depends on luck, then your effort has to be that much more, because you have to be sure of yourself. Then luck will be more liable be on your side. राइट राइट, बेड से उठ के जाके पेपर मत दे देना नहीं तो फिर से देना पड़ेगा। सेकेंडली मैं कोर्स के बारे में बात करती हूँ जो हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इट्स अ 2 months कोर्स ऑन डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। सेम कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी, दैट इज स्क्रीन एक्टिंग, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइनिंग, और अपना सिनेमेटोग्राफी। हम लोग के ऑलरेडी सबके बैचेस चल ही रहे हैं, हम लोग सेकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसको भी अप्लाई करने कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। सब सारी डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग की जो कोर्स की फीस है 10,000 है, आप उसको पे कर सकते हो 5,000 मंथली करके। इसमें आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू, एमएसक्यू और डिस्क्रिप्टिव सबका प्रॉपर प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आपकी राइटिंग्स को रिव्यू किया जाएगा, एक्सरसाइजेस रहेगी, फिल्म्स रहेंगे, फिल्म्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे। जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं उन सबके हम लोग गेस्ट लेक्चर्स करवाएंगे, ताकि आपको ये जो फील्ड है प्रॉपर समझ में है। बहुत लोगों को क्या होता है ना, कि लोगों को पता होता है कि मेरे को फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो उन लोगों को एफटीआई में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है लोगों को वहां पे नहीं समझ में आता है कि उस एडमिशन को कैसे यूज करें। बहुत लोग वहां पे जाके खो जाते हैं कि अब कैसे करना है। फिर पास वहां से जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं वहां से, तो भी हम लोग को समझ में आता है कैसे अप्रोच करें, क्या नेटवर्क हो, कम्युनिटी लोग नहीं बनाते हैं। तो वो सारी चीज पे आप ये हम लोग की वर्कशॉप, आई मीन ये कोर्स करोगे तो आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, आपका नेटवर्क बन जाएगा, वो क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे अपने आप को एज अ फिल्म डायरेक्टर या फिर राइटर लेके कैसे आगे चलना है, और कैसे नेटवर्क बिल्ड करने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें। सेकेंडली आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी इन सारी चीजों की, और हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे, दैट इज आफ्टर 15 डेज। जब आपका प्रॉपर 15 डेज पास हो जाएगा, फिर हम लोग मॉक टेस्ट पेपर्स पर आएंगे। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देंगे। एंड हम लोग एडिटिंग का एक बैच हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके एडिटर्स फ्रेंड्स हैं जो क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग एडिटिंग का बैच करने वाले हैं। उनकी जो भी फैकल्टी है, ही इज ऑल्सो एसआरएफटीआई पास आउट, एंड उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर्स पे काम किया। हिज नेम इज शुभदीप घोष।
और साउंड और रिकॉर्डिंग की भी बैच स्टार्ट होने वाली है जो 13 से स्टार्ट होगी। वो भी SRFTI पास आउट है एंड हर हर नेम इज लाइक सीमा शुक्ला एंड उन्होंने काफी काम किया, उनको काफी अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। फिर अपनी सिनेमेटोग्राफी की जो मेंटोर है हिज नेम इज हिज नेम इज अभिजीत नंदी, SRFTI पास आउट एंड ही इज करेंटली वर्किंग एज अ फैकल्टी एट दून फिल्म स्कूल, वहाँ के वो HOD हैं फॉर द सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट। देन कम्स टू स्क्रीन एक्टिंग। स्क्रीन एक्टिंग के भी हम लोग गाइडेंस सेशन करने वाले 9 बजे, और इनके जो फैसिलिटेटर हैं फॉर द स्क्रीन एक्टिंग, हिज नेम इज संजय कुमार साहू, FTI पास आउट फ्रॉम बैच 16। इन्होंने काफी फिल्में की हुई हैं और अभी इनका एक रिसेंटली प्रोजेक्ट आने वाला है विद नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर कौशिक गांगुली। तो ये सारी चीजें, तो जिसको भी अप्लाई करना हो, कुछ भी करने, सपोज कोर्स नहीं भी करना हो, गाइडेंस चाहिए, तो just approach us. We are like available for you all. और 1-to-1 मेंटोरशिप है ही। तो मेरे को 1-to-1 मेंटोरशिप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगता है। अभी एक बैच हम लोग का चल रहा है, मतलब एक जने ने लिया 1-to-1 मेंटोरशिप और उसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स है। इट्स बेसिकली लाइक गुरु शिष्य परंपरा, आपका गुरु है, आप शिष्य हो, और ये सारी चीजें बस ऑनलाइन है इस जमाने के हिसाब से। तो ये चीज है, तो हम लोग उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि आपकी कितनी फिजिबिलिटी है एंड ये सारी चीजें। तो आज की सेशन को हम लोग रैप करते हैं। जिसको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, हम लोग को व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एंड आई थिंक दैट्स द एंड फॉर द सेशन नाउ, and I'll thank everybody for joining the session and motivating and encouraging us. Okay. All right, and best of luck to you all. I mean, I'm always very happy to see young people. It reminds me of how I used to be. In our time, we didn't have any options of any entrance or anything like that. So, and the scene was much smaller. So that time, we used to learn from among ourselves only, mostly. Like हम सब मिलके ऐसे फिल्म फेस्टिवल जाते हैं, कहीं कोई स्क्रीनिंग हो गई, चले गए, तो वही हमारा नेटवर्क होता था. But now it has become so huge and there's so much competition and there's so many people applying that now you have to have a little bit more focused and targeted way of doing it. So that is why it's such a course exists. नहीं तो हमारे जमाने में तो कुछ था ही नहीं ऐसा course. So anyway, world changes, things change, and we have to change according to it. So this is our attempt at aiding you on that, and best of luck to you all, whether you come to our course or not. I hope you guys get through, and yeah, best of luck. I'll share my WhatsApp link. Just give me a minute. I'll just share. Yeah. 1 second. I'm just sharing. So that's the link for the WhatsApp group. तो जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. For this art and culture book, I'm making notes. So it will be a form of a booklet which I'll share in some time. So the person who are like doing a course with us, with them I'll share the art and culture book, which will be inclusive of your cinema part also. Cinema, national awards and all the awards, Sahitya Academy Award, everything. So for that I'll share the book, which will include all the